माननीय अतिथिगण, आज हम एक ऐतिहासिक क्षण पर हैं जब भारत सरकार और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के मध्य एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने जा रहा है। ये समस्या 1947 से देश झेल रहा था। सुरक्षा बलों और नागाओं के बीच निरंतर संघर्ष चल रहा था। इसमें हजारों लोगों की जानें गईं और कई पीढ़ियों का भविष्य खो गया। शांति प्रक्रिया 1997 में आरंभ हुई और 18 वर्ष के बाद इस प्रक्रिया को हम इस अंजाम तक लाए हैं कि अब नागालैंड शांति और विकास के पथ पर चल पड़ेगा। We have gathered here today for the signing of an accord between the Government of India and the National Socialist Council of Nagaland in the presence of the Honorable Prime Minister of India and witnessed by the Honorable Home Minister, the National Security Advisor, and the delegation of Naga leaders. To commence this historic occasion, may I now invite Mr. R.N. Ravi to take his place on behalf of the Government of India. May I now invite Mr. T. Muiva, General Secretary of the National Socialist Council of Nagaland, to come for the signing ceremony. May I now invite Mr. T. Muiva to deliver his remarks on this historic occasion. I thank God for this momentous occasion. On behalf of the Chairman, Mr. Achek Chishisu, and the Naga people, kindly allow me to begin by saying that Naga people have great respect
for Mahatma Gandhi because he understood and respected the Nagas when the Nagas delegation met him for the first time in 1947. Unfortunately, after the Naga delegation met him, after his demise, the Indian state resorted to military might to crush the Nagas. Arms confrontation followed, inflicting heavy losses on both the parties. After a long fighting, Mr. Narasimha Rao, the then Prime Minister of India, had the courage to admit that it is a political issue and should be solved through political negotiation. We appreciated his wisdom and accepted the ceasefire agreement to start political negotiations in 1997. We gave our commitment to him that NSCN shall leave no stone unturned to find a negotiated, amicable settlement between the two parties. The Nagas were very happy when the government of India, under the leadership of the then Prime Minister of India, Mr. Atal Bihari Vajpayee, declared the recognition of the unique history and situation of the Nagas in 2002. We Nagas appreciated the statesmanship of Mr. Atal Bihari Vajpayee, and we gave our commitment that if the government of India would understand the reality of the Nagas would appreciate the reality of India even 10 times more, and we never backtrack from our commitment. Today, under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi, we have come close to understand each other and have worked out a new relationship between the two parties on the basis of the uniqueness. We appreciate your wisdom, your leadership, and your vision to build an enduring relationship between the Nagas and Indians. The Nagas will ever remember you for your statesmanship and your profound understanding of the Nagas with warm heart for them. Beginning from now, the challenges will be great, so also the responsibilities. The obligation to meet the needs of the people shall be paramount for both the parties to make this historic endeavor more meaningful. Let me also assure you that Nagas can still come closer if their rights are respected. On behalf of the Naga people, allow me to assure you once again that the Nagas can be trustworthy and take into your confidence for any policy in the Northeast and beyond the frontiers. God bless you and your leadership. Koknalim. Thank you. There is a special present for the Prime Minister from the people of Nagaland, from the NSCN.
अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अपना वक्तव्य दें. May I now request the Honorable Prime Minister to deliver his remarks on this historic occasion. Shri Rajnath Singh ji, Home Minister, Shri Maua, and all senior leaders of the National Socialist Council of Nagaland. My warm greetings to all those present here today on this historic occasion. I wish that Sri Isaac Su, who played a leading role in reaching this agreement, was present today. He could not be here because of poor health. I wish him speedy recovery. Just as his contribution to this agreement has been huge, his guidance will remain crucial in the times ahead. The Naga political issue had lingered for 6 decades, taking a huge toll on generations of our people. I sincerely thank Sri Isaac Su, Sri Muiwa, and other Naga leaders for their wisdom and courage, for their efforts and cooperation, which has resulted in this historic agreement. I have the deepest admiration for the great Naga people, for their extraordinary support to the peace efforts. I compliment the National Socialistic Council of Nagaland for maintaining the ceasefire agreement for nearly 2 decades with a sense of honor that defines the great Naga people. My relationship with the Northeast has been deep. I have traveled to Nagaland on many occasions. I have been deeply impressed by the rich and diverse culture and the unique way of life of the Naga people. It makes not only our nation but also the world a more beautiful place. The Naga courage and commitment are legendary. Equally, they represent the highest levels of humanism. Their system of village administration and grassroots democracy should be an inspiration for the rest of the country. The respect for the infirm and elders, the status of women in society, sensitivity to Mother Nature, and the emphasis on social equality is a natural way of Naga life. These are values that should constitute the foundation of the society that we all seek. Unfortunately, the Naga problem has taken so long to resolve because we did not understand each other. It is a legacy of British rule. The colonial rulers had, by design, kept the Nagas isolated and insulated. They propagated terrible myths about Nagas in the rest of the country. They deliberately supported the reality that the Nagas were an extremely evolved society. They also spread negative ideas about the rest of the India among Naga people. This was part of the well-known policy of divide and rule of the colonial rulers. It is one of the tragedies of independent India
that we have lived with this legacy. There were not many like Mahatma Gandhi who loved the Naga people and was sensitive to their sentiments. We have continued to look at each other through the prism of false precedents and old prejudice. The result was that connectivity between Nagaland and the rest of India remained weak across this divide. Economic development and progress in Nagaland remained modest, and durable peace was elusive since becoming Prime Minister last year. Peace, security, and economic transformation of Northeast has been among my highest priorities. It is also at the heart of my foreign policy, especially the Act East policy have been deeply concerned about resolving the Naga issue soon after entering office. I appointed an interlocutor for talks with the Naga leaders who not only understood the Naga people as also their aspirations and expectations, but has great affection and respect for them. Given the importance of this initiative, I asked my office to supervise these talks, and I personally kept in touch with the progress. I want to especially thank my senior colleague, Home Minister Sri Rajnath Singh Ji, whose supported and advice was invaluable in bringing us here today. Today's agreement is a shining example of what we can achieve when we deal with each other in a spirit of equality and respect, trust and confidence, when we seek to understand concerns and try to address aspirations, when we leave the path of dispute and take the high road of dialogue. It is a lesson and an inspiration in our troubled world. Today, we mark not merely the end of a problem, but the beginning of a new future. We will not only try to heal wounds and resolve problems, but also be your partner as you restore your pride and prestige. Today, to the leaders and the people of Nagaland, I say this: you will not only build a bright future of Nagaland, but your talents, traditions, and efforts will also contribute to making the nation stronger, more secure, more inclusive, and more prosperous. You are also the guardian of our eastern frontiers and our gateway to the world beyond. Equally, the rest of the nation will join you in shaping a future of dignity, opportunity, and prosperity for the people of Naga. Today, as you begin a new glorious chapter with a sense of pride, self-confidence, and self-respect, I join the nation in saluting you and conveying our good wishes to the Naga people. Thank you very much. मेरे प्यारे देशवासियों, आज एक नए युग का आरंभ हो रहा है। 3 अगस्त भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में अंकित की जाएगी। देश आजाद हुआ तब से इंसर्जेंसी के कारण
कभी तनाव का, कभी लड़ाई का, कभी मार काट का माहौल बना रहा। आशंकाएं इतनी गहरी थी कि कोई किसी पे भरोसा नहीं करता था। 60 साल से भी अधिक समय बीत गया। आज वो एक सुनहरा पल आया है जब हम शस्त्र को छोड़ करके, कंधे से कंधा मिला करके नागालैंड का भी विकास हो और हिंदुस्तान का भी विकास हो, उस एक सपने को लेकर के नई यात्रा का प्रारंभ कर रहे हैं। मैं NSCN के, जो कि इस इलाके का सबसे बड़ा प्रमुख संगठन रहा है, उनके नेताओं का आज हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और श्रीमान मुइवा जी, श्रीमान आइजैक स्यू जी, उन्होंने जो दूरदृष्टि दिखाई है और जो योगदान दिया है, और सभी नागा ग्रुपों को साथ लेकर के जो भूमिका अदा की है, जो आने वाले दिनों में नागालैंड के भविष्य को स्वर्णिम बनाने का कारण बनने वाली है। मैं पिछले दिनों जब नागालैंड गया प्रधानमंत्री बनने के बाद, बहुत बड़ी संख्या में डेलीगेशंस मुझे मिले थे। हर किसी ने एक ही बात कही कि कोई रास्ता निकालो। गत महीने वहां के स्पीकर, वहां के मुख्यमंत्री सभी दलों का डेलीगेशन लेकर के आए थे। उन्होंने भी मुझे आग्रह से यही कहा कि आपकी सरकार के पास से अपेक्षाएं हैं, आप रास्ता निकालिए। सब दूर से एक ही बात आती थी कि नागालैंड विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहता है, नागालैंड आगे बढ़ना चाहता है। मुझे हर किसी की बात पे भरोसा हुआ और लगातार इस बातों को आगे बढ़ाया गया। नागा संगठनों के कुछ लोग भी मुझे मिलने आए और आज वो स्वर्णिम पल के हम लोग हिस्सेदार बने हैं। और जैसा मुइवा जी ने कहा, अगर महात्मा गांधी लंबे समय तक हमारे बीच होते तो इस समस्या का समाधान हो गया होता। मुझे खुशी है कि एक प्रकार से आज की ये घटना महात्मा गांधी को एक उत्तम से उत्तम श्रद्धांजलि बनी रही है। और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं उस धरती से आया हूं जहां पर महात्मा गांधी ने जन्म लिया था। मेरी खुशी कितनी होगी इसका आप अंदाज कर सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि बहुत ही जल्द इस एकॉर्ड के अनुकूल सारी व्यवस्थाओं को हम विकसित करेंगे और एक बहुत बड़ी शक्ति NSCN की राष्ट्र के विकास का हिस्सा बनेगी। मैं आप सबको निमंत्रित करता हूं, आओ हम सब मिलकर के मां भारती के गौरवगान के लिए अपनी बुद्धि, शक्ति, सामर्थ्य को लगाएं, हमारे अपने नागालैंड को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं, विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएं और पूरे नॉर्थ ईस्ट को ताकत देने की जगह नागालैंड में देख रहा हूं। और जो हमारी एक टेस्ट पॉलिसी है, पूर्व के देशों की ओर जाने का हमारा प्रवेश द्वार है नागालैंड। एक बहुत बड़ी अहम अवस्था मैं मेरे सामने देख रहा हूं और उस सपनों को आज हम पूरा हुआ देखते रहे हैं।
60-70 साल बहुत बड़ा लंबा कालखंड होता है। आप लोगों ने बहुत कठिनाइयां झेली होगी, बहुत गहरे गांव होंगे, लेकिन मेरे प्यारे नागा भाइयों, आपने हम पर जितना विश्वास किया है, मैं उससे भी ज्यादा ताकत से उस विश्वास को बरकरार करने के लिए भरसक प्रयास करता रहूंगा और नागा का उज्जवल भविष्य, इस सपने को साकार करने के लिए हम पूरी शक्ति लगा देंगे। मैं फिर एक बार नागा नेताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और इस मेन स्ट्रीम में आने के लिए उनका हृदय से स्वागत करता हूं। मुझे विश्वास है कि शस्त्र समस्याओं का समाधान नहीं है, हिंसा ने समस्याओं का समाधान नहीं किया है। यही रास्ता है जो रास्ता हमें आगे बढ़ाएगा। और आज जो कि सबसे बड़ा, सबसे पुराना इंसर्जेंसी वाला मामला निपट रहा है, छोटे मोटे और भी जगह पे हिंदुस्तान के कोने कोने में जो कुछ चीजें चल रही हैं, उनके लिए भी एक मार्गदर्शन बनेगा। NSCN देश के उन लोगों के लिए भी मार्गदर्शक बनेगा जो गलत रास्ते से निकल करके सही रास्ते पर आना चाहते होंगे। उनको मुझे विश्वास है कि NSCN के नेताओं का आज जो दूरदृष्टि भरा निर्णय है, वो उनको भी रास्ता दिखाएगा। तो न सिर्फ नागालैंड का भविष्य, लेकिन भारत में जहां जहां हिंसक घटनाओं के कारण परेशानियां हो रही हैं, उनका भविष्य बनाने में भी नागालैंड बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा, NSCN बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा, ये मुझे विश्वास है। इस विश्वास के साथ फिर एक बार मेरे प्यारे नागावासियों, आइए हम सब मिलकर के प्रगति की नई ऊंचाइयों को पार करने के लिए आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। May I now invite all those present on the dais, as well as all the Naga leaders present here, to join for a group photograph.